We all set for the toss as FCI take on AAI. It is a two-or-die game for FCI and AAI want to finish on a high note. Leading AAI today is Chris Yadav and leading FCI is Chetan Sharma, and we have got over here with us Ramit Sajjava and match referee over here Bakshi over here. So I would request Chetan to flip the coin. Tails is a call. Hits. It is head. Chetan. Big game. Important game. A win secures a place in the semi-final. And is there any change or you're going with the same combination? Team wants to know, everyone wants to know, what are you going to do? Are you going to go bat or ball first? All the best for the game. So, in the Super League, things have not gone that well, but you want to finish on a high note. So we would like to finish on a high note. It's the last game, so yeah, that's should be our point to improve in this match. Any change? Yeah, we have a couple of changes. 3 changes. All the best for the game. So the The news news from from the the center center is is that that it it is is FCI FCI was was won won the the toss toss and and decided decided to to bat bat first. first. मेरे साथ अब दो मोहम्मद ट्रॉफी प्लेयर जुड़ चुके हैं विदर्भ से यहाँ पर मनोज कोपके सर और बिहार से मेरे साथ यहाँ पर सरफराज अहमद सर जुड़ चुके हैं। पहले थोड़ा अपने बारे में बताएं मनोज सर। गुड मॉर्निंग। मैं रणजी ट्रॉफी विदर्भ से खेला हूँ और ऑल इंडिया ने और ऑल इंडिया कॉन्ट्री सेक्टर कमेटी का जो किया है उन्होंने जो यहाँ पे हमको एक अपॉर्चुनिटी दिया है कि एक जो बड़ा इवेंट जो है कैसा अच्छा होना चाहिए और हम लोग हमारी तरफ से पूरा बेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट्स देने का विकेट का जो प्लेयर्स को सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है 22 यार्ड्स का जो विकेट है वो अच्छा अगर रहेगा तो उनको खेलने में भी मजा आएगा। तो हम लोग यहाँ पे 7 तारीख को जब आए तो थोड़ा सा विकेट का कंडीशन डिटोरिएट था, लेकिन यहाँ के ग्राउंड्समैन जो है उन्होंने भी अच्छा कोऑपरेट किया। उनको जो हमने गाइडलाइन दिया उसको उन्होंने फॉलो करते हुए ये पूरा अभी आज यहाँ पे सुपर लीग का सबसे आखिरी का गेम है और दोनों गेम अच्छे हैं और प्लेयर्स भी बड़ा अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं, अच्छे स्पिरिट में खेल रहे हैं और सभी प्लेयर्स को भी हमारी तरफ से बधाई और ऐसे ही आगे में सेमीफाइनल फाइनल के ऐसा ही सक्सेसफुली हो जाएगा ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल है। तो सरफराज सर थोड़ा अपने बारे में बताएं और कैसी तैयारी रही है इस ग्राउंड पे, मतलब इतना बड़ा टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए। पहले तो थैंक यू फॉर इंडिया आपको बुलाने के लिए। मैं एक्चुअली ट्रॉफी प्लेयर बिहार वर्किंग इन सीएम के लिए जो कोर्ने के अंदर में आता है। बहुत अच्छा ये टूर्नामेंट है, इतना खूबसूरत ग्राउंड, इतना अच्छा अरेंजमेंट, हम ऑर्गेनाइजर से लेके सभी टॉप लोगों से लेके सभी का शुक्रगुजार हूँ। कितना अच्छा प्लेइंग कंडीशन उन्होंने दिया है, ड्रेसिंग रूम से लेकर के, जबकि ये अंडर कंस्ट्रक्शन है फिर भी सभी चीज़ की यहाँ सहूलत है। और सबसे बड़ी बात कि विकेट बहुत अच्छा है, 200 रन बन रहे हैं, कहीं कोई एरर हो नहीं सकता, जबकि ये ओपन ग्राउंड है। ग्राउंड्समैन ने भी बाद में बहुत मेहनत किया, हम लोगों के साथ ऑर्गेनाइजर ने भी बहुत कोऑपरेट किया एंड थैंक यू। तो और वेदर वीक में आपने देखा होगा कि पिछले 4-5 दिन में क्लाउडी था, कल से धूप हो रही है उस वजह का, लेकिन फिर भी थैंक्स गॉड, थैंक्स ऑल इंडिया, थैंक्स ऑल इंडिया पब्लिक सेक्टर कि इतना अच्छा टूर्नामेंट और प्लेयर्स हमारे सभी से सेटिस्फाइड है, जबकि यहाँ इंडिया प्लेयर से लेकर आईपीएल लेवल के प्लेयर सब आ रहे हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज है जो आपको लगता है कि आपने क्रिकेट खुद ने खेली है, तो जब इस क्लास के प्लेयर जो इंडिया प्लेयर आईपीएल प्लेयर रणजी ट्रॉफी प्लेयर यहाँ पर खेलने आए तो उनको क्या फैसिलिटी चाहिए उसके लिए आपको बहुत से पता होता है। एक्चुअली हम लोग जैसा खेले हुए हैं तो हमको नो द व्हाट इज देयर बेसिक नीड्स, तो उनको विकेट का कंडीशंस, पैविलियन और अदर फैसिलिटी के जिससे उनका परफॉर्मेंस एनहांस हो, उसके लिए हम लोग पूरा सतर्क रहते हैं और बेस्ट पॉसिबल अच्छा देने की कोशिश करते हैं।
तो इस कॉल इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो इनिशिएटिव लिया गया इसके बारे में क्या कहेंगे इस तरीके के उन्होंने आपके सवाल आपसे बस देखिए, एक तो बहुत क्रिकेट फ्लोरिश करने की ज़रूरत है और इस ग्राउंड पर और इतना सारा कुछ होते हुए इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अपकमिंग प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छा है। और थैंक यू वंस अगेन हम लोगों के लिए, हमारे टॉप सीनियर लेवल से लेकर के नीचे तक के लोगों के लिए कितना अच्छा टूर्नामेंट इन्होंने कंडक्ट किया। थैंक यू वेरी मच। Really, thanks a lot for Cool India and All India Public Sector Committee. ऐसा ही आयोजन होते रहे और हम लोगों को ऐसा सेवा करने का मौका। Thank you, Manoj sir. Thank you, sir. Over to Combox, sir. Sunny weather today for the match. It's a perfect situation. সুমির আমি কি এ ভাই সুমির আমি কি খেতে চলে যাবো নাকি না থাকবো কিছু করার নেই কেমন সাইড স্ক্রিন ছিঁড়ে গেছে আচ্ছা আমি ওয়েট করে দিলাম নে Umpires just waited for a few minutes. There is a side screen problem. Of India. Important game for FCI. If they win, they will make it to the semi-final. If they don't, then it is going to be Bank of Baroda. Swastik came back in form in the last game, got important 65. But he's come back in form at the right time. FCI will be batting first over here. We're all set. It is going to be Divyansh is going to start the proceedings over here for his team. One slip, shot third man. In the position over here for Swastik. Here we go, first ball. And what a shot! Gets off the mark in style with that uppercut over point. That is Swastik at his best. Just getting in form in the last game and now starting this innings with a wonderful shot. Swastik Chikara. Sahil Parak. Two openers who are in a good form at the moment. That's played well. Played it late and gets it past the shot third man and he'll pick up a boundary. Back-to-back boundary over here for Swastik. He starts well. Subir Banerjee, Abhishek Aldar are two on-field umpires. Sandeep De, Shavik Das are scorers. And Saibal Chandra, our match referee. A big shout and gone! And what a comeback from the Viansh over here. After two boundary, gets rid of dangerous Swastik. Just pitching the ball up. There was a little bit inward movement. And getting it on the pads of Swastik.
umpire took his time and then raised the finger. Swastik goes for 8 today. In walks another dangerous batter, Ankit Chatterjee. He is also in a good form. Runs haven't come in the last 2 games for him. Two destructive left-hand batters out in the middle now. Devyan Shirawat making a good comeback over here. After hitting 2 boundaries, then pitching the ball up. 10 hundreds, 950s, a strike rate just above 100. But is more dangerous than what the figures suggest over here. Once he starts hitting, it's difficult to keep him quiet. That is a shaped away. Just leaves this one for the wicket keeper. Eight for one with 2 more balls to go. He's now coming round the wicket to the left-hander. Oh, that's been played very well. Just using the pace of the bowler and getting it over the slips of 4 runs. Ankit gets off the mark with a boundary over here. Just making good use of the pace. That was really stroked well. Over the slip to pick up a boundary over here. 3rd boundary in the over. He's trying to learn a lot. Young fast bowler Divyansh Rawat. Goes for the big one. Doesn't get anything on the bat. That's outside that wide line. So that's going to be a wide. 13 on the board. Divyansh, a couple of days back, was having word with CAG captain Prerak, trying to learn a lot of things, sharing his point of view and trying to get more from the experienced campaigner Prerak over there so that he can improve day by day. And he was giving him healthy tips over there. You need to read the batter style, what kind of a batter he is. According to that, you have to just vary your pace and length and line. A single of the last ball. After 1, it is 14 for 1.
Swapnil Rai. Kim just been hold it for a while. It's going to be Swapnil Rai who will be sharing the new ball with Divyansh Rawat. The umpires are just waiting for that. One of the stump. Oh no, it's regarding the side screen. First we thought it's regarding the stumps, but now it's because of the side screen. That side screen has just been the problem over here. So work is going on so they can just get the things sorted at the side screen. Just waiting for that side screen to be positioned well, and whatever the problem is there regarding the side screen, that will be sorted out. Because it's a heavy breeze blowing over here. The batters might have that problem regarding that side screen. You could see lower base, the bottom of the side screen, somehow because of that breeze have just come out. So just trying to get it rectified over here, trying to get the things sorted over there. There you see the things being sorted regarding that side screen, which was the problem. So it's been sorted over here. So everything is fine now, and Swapnil to run in. Wicketkeeper is up to the stumps. First ball in the air. Doesn't get to the mid-on field. A direct hit needed over there. But the throw was at the wrong end. He went at the keeper's end.
This is something you need to be more active. Could have easily charged onto the ball and could have got it directed at the non-striker end. They could have had a wicket over here in their pocket. Now the man who's been firing is on strike now, Sahil. Sahil Parak. Sahil Parak. Plays this one off the back foot for no runs. Good one. A dot ball. This is good bowling from Swapnil Rai. That's a wonderful shot. How quickly picks a length. And has put this one for a maximum. He gets off the mark in style with a 6. Short ball onto the leg stump. And he's not going to miss out. He's a dangerous batter. That's played onto the onside. Running first, run hard, but won't get the second. 2 overs done. And with that, score is 22 for 1. Two overs are done. Score is 22 for 1. Swapnil went for 8 in his first over. At 22, Sahil batting on 7. He's been a good form. Couldn't get much in the last game, which was a big game against CAG. That's played towards the onside. He'll pick up a single. Highest score by any team is 246. Highest run chase is the team which is batting now 199. The lowest total defended is 156 by RBI.
Total 496 fours and 352 sixes. This is before this match. Before this match is the fours and sixes which were hit. The fours and sixes of this match has not been counted till now. Highest individual score, that is 117 by Swastik Samal. Best bowling performance from Varun Sood. 10 for 6. Highest partnership for any wicket, that is 160 between Swastik and Prerak. The second best partnership is also between Swastik and Prerak, that is 159. Fastest 50, that is by Rahul Chaudhary of 18 balls. And fastest century by Sahil, was batting at the crease at the moment, 51 balls. Till now, it's going to be wide. The matches we have seen been played in that 24 matches, 48 innings, 6,205 runs been scored, 297 wickets have fallen, where 4,543 has been the dot balls, 29 half centuries, 2 century, 3650 plus partnership, 400 plus partnership, 24 maidens. Missed time shot. Taken. Second wicket for Divyansh. It's now Ankit who has to go back. Looking for the big one over there. The bat's turning into his hand and then slicing it in the air. Good catch over there by the fielder at mid-off. Number 2 goes down, 24 for 2. Big game, important game for FCI. They need to win this one if they need to make it to the semi-final. The other team at home would be praying that today AAI wins this one. So that means they will qualify. The man who got 46 in the last game, Umang, is walking out in the middle now. Missed out his half century, but it was an entertaining knock from him. In the Super League, from Pool A, 2 teams will qualify to the semi-final. From Pool B, the topper will qualify. That's SBI, who's already qualified. And from Pool C, in the next match, we'll know about will we see RBI making it or will it be UBI making it. The one who wins that game, you can say it's a virtual quarterfinal between those 2 teams. That second match between RBI and UBI. The one who wins it makes it to the semi-final. In Group A, in CAG have already made it to the semi-final. Beautiful delivery. 2 wickets. Is learning match by match. And if FCI wins, then second team from Pool A to make it to semi-final will be FCI. If FCI doesn't win, then it is going to be Bank of Baroda. SBI already qualified. And then from Pool C, the one who wins the last Super League match between RBI and UBI will make it to the semi-final. That's a really timed well. They do have that protection in the deep. So will just be a single. 25 for 2.
That's a good shot, but straight to that fielder. Aditya is there. A good over from Divyansh Rawat. 3 overs done, score is 25-2. Swapnil looking for the Yorker, missing the length, and that has been hit towards long on to pick up a single. Captain is there, Krish Yadav over there. These two trying to get a partnership in over here. Oh, what a shot! That's a wonderful shot for 4 runs. That was really struck with a lot of power. Just getting it over that cover for the 4. That's time off the legs. Played away towards that wide-ish mid-wicket for 4 runs. Timing so good, and the placement was excellent over there. That's been played into the offside. He'll pick up a single. Going well over here, Sahil. Who might have missed out in the last game, but in this game he's going well over here. He needs a partner over here with him now. Umang needs to be that man who can stay with him and get a good partnership. That's going to be called a wide. Just needs to bowl that again. That's well played off his legs.
And he picks up an easy single on the onside. Just dealing in singles at the moment. That's going to be another wide in the over. You've seen too many wides. It's just been drifting down the leg side. I think Yashwardhan has done well behind the stumps. So we're done with 4 overs with 2 more to go in the power play. It is 39 for 2. The change in bowling as Abhimanyu Gupta comes into the attack. 2 more to go in the power play. 39 for 2. Wicketkeeper makes a mistake. This goes through the wicketkeeper's gloves for 4 byes. They won't mind it till these runs are coming. Runs coming quite easily at the moment. That's been played off his legs, but straight to that shot. Oh, directed! Shout! But the batter was home. That was played straight to that short fine leg fielder, and he went for a risky single. There was a direct hit, but Sile quickly rushing at the non-striker end and just makes it at the right time. That has been played. Not that well. He might have been disappointed that he missed out on putting that one away. Oh, that has come in. On the last ball, there was an opportunity where he could have easily put that one away. That came back in, heading higher on that back leg.
And a single picked up over there. So these two batters really going on with the business over here in between getting those boundaries and singles quite easily, just rotating the strikes so well. Single picked up over there. So dealing it in singles at the moment. But the batters have been careful and playing the shots on the merit, not trying to do anything unnecessarily over here. Generally, you won't see Sahil that quiet because the bowling is going on so well, and that has been played through that slip region towards a deep third man for a single. 50 up with that boundary over there. After 5 score is 51 for 2. Just opening the face of the blade quite easily and deliberately to pick up that boundary. You might think it's off the outer edge. No, it was deliberately played towards that deep third man for the 4. So they're going well, going at almost 10 runs per over. Two batters were dismissed. To was Swastik who got a good start, 2 boundaries. Then he was dismissed a leg before wicket. Then another wicket of Ankit was picked up by Divyansh. 2 wickets which have fallen down, both picked up by Divyansh. These two trying to stitch a partnership over here. Sahil and Umang. Played that one back to the bowler. That's played off of one hand. Cut this one into that deep sweeper cover for a single. Last over going on of the power play. That's a wonderful shot. Beautiful shot of the front foot. Lovely drive, lovely cover drive. Just gets it. It between the cover and mid off field over 4 runs. A man who just got back into the form, getting his confidence going over here. No chance for Divyansh to stop that one. That was a lovely cover drive before. But that's going to be a wide.
That's a lovely shot. This time he goes aerial. One bounce into the fence of 4 runs. Just pitched up this time, not trying to keep it along the carpet. Going aerial for 4 runs. This is good batting from Umang. A good Yorker to come back over here by Swapnil. Umang has played his innings till now on the merit of the ball. If the good balls are there, he's shown the respect. If the ball is there to be put away, he's put them away. That wasn't that shot where he went for a pull shot, heading this one to Aditya. Shot mid wicket for no runs. Power play done. Score is 61 for 2. जबरदस्त पार्टनरशिप इन दोनों बल्लेबाजों के बीच. ये एक अच्छी साझेदारी यहाँ पर पनपती इन दोनों बल्लेबाजों के बीच. यहाँ पर अच्छी तरीके से बल्लेबाजी की दोनों बल्लेबाजों ने. जिम्मेदारी जानते हैं कि बड़ी आज जिम्मेदारी. यहाँ पर अगर हारे तो फिर सेमीफाइनल के लिए वो जिस जगह के लिए वो लड़ रहे हैं वो जगह उनको मिलेगी नहीं. अगर वो जगह उनको प्राप्त करनी है और वहाँ पर पहुंचना है, सेमीफाइनल कल खेलना है, तो फिर ये मुकाबला जीतना जरूरी है. इसलिए पूरी जिम्मेदारी से खेल रहे दोनों बल्लेबाज. 37 रन जोड़ चुके हैं 21 गेंदों में. 37 में जोड़ दीजिए 6 और. जबरदस्त बल्लेबाजी. क्या कमाल के बल्लेबाज हैं ये. छोटी गेंद को बिल्कुल भी नहीं बख्शते. बड़ी जल्दी पोजीशन में आ जाते हैं. फिर वो ताकत, वो प्रहार इस प्रकार से करते हैं कि गेंद रुकती नहीं है. फिर 43 की ये साझेदारी. कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं अभिमन्यु क्योंकि खिलाफ साहिल. विकेट कीपर को ऊपर बुलाया. विकेट कीपर को ऊपर बुलाने से क्या होगा? अगर लेंथ लेग स्टंप से बाहर हो और लाइन भी उससे बाहर हो और लेंथ इतनी छोटी हो, जो लेंथ अगर आप देखें उसकी लाइन जो थी वो लेग स्टंप से बाहर थी. लेंथ बहुत छोटी थी और लेग स्टंप से बाहर ये गेंद थी जिसमें जड़ दिया चौका बढ़िया अंदाज में. विकेट कीपर को ऊपर बुलाने का मतलब आप लेग स्टंप से गेंद कर ही नहीं सकते. ये अच्छी लाइन, ये अच्छी लाइन. मिडिल स्टंप ऑफ स्टंप के आसपास आपको गेंद रखनी होगी. 47 रन की साझेदारी. और ये क्या कमाल का शॉट है. 50 रन की साझेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच. 51 रन जोड़ चुके हैं दोनों बल्लेबाज तीसरे विकेट के लिए. जबरदस्त बल्लेबाजी युवा साहिल के द्वारा. एक छक्का 2 चौके पूरी तरीके से हावी नजर आए यहां पर अभिमन्यु के ऊपर. अब देखना अभिमन्यु करते क्या हैं.
चाहते फील्ड में कुछ बदलाव हो। ये पहले ही बड़ी हिट 6 रन लगाए थे, फिर ये चौका पानले के ऊपर से, और फिर ये दूसरा चौका इस ओवर में जो एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से जड़ा। ये अच्छी गेंद जिसको सीधा खेला गेंदबाज की तरफ, कोई रन नहीं। 14 रन आ चुके इस ओवर में, इसलिए ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहेंगे साहिल। अब 24 पे दूसरा विकेट गिरा था, उसके बाद ये एक अच्छी साझेदारी तीसरे विकेट के लिए। 51 रन जोड़ चुके दोनों बल्लेबाज। बड़ी आसानी से खेल दिया इसको, ऑन साइड में कलाइयों का इस्तेमाल किया। 7 के बाद 76, 2 विकेट के नुकसान पे। नदीम मलिक आए गेंदबाजी करने के लिए, अच्छे गेंदबाज हैं। लीग स्टेज में बढ़िया गेंदबाजी की थी, एक मुकाबले में 4 विकेट छटकाए थे। सुपर लीग में इतनी बढ़िया गेंदबाजी रही नहीं। आज चाहेंगे कप्तान की वो जबरदस्त गेंदबाजी हो, ये साझेदारी को तोड़ा जाए। एक समय अभिमन्यु इशारा कर रहे थे कि आप रोकिए जनाब, फिर बाद में पता चला गेंद इतनी तेजी से निकल नहीं रही थी, स्वयं ने रोका। कर रहे थे इशारा पीछे जो फील्डर मौजूद थे उनको कि आपकी तरफ आ रही गेंद। सबसे तेज अर्शतक राहुल चौधरी के नाम 18 गेंदों में बनाया, कल बनाया था, क्या जबरदस्त अर्शतक था वो। उसी मुकाबले में उनके एक और खिलाड़ी ने जबरदस्त गेंदबाजी की, 6 विकेट लिए। इस बीच साहिल के बल्ले से करारा कट शॉट, 4 रन। 29 अर्शतक लग चुके हैं अभी तक, 30वां ज्यादा दूर है नहीं। साहिल 41 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, और ये लीजिए नदीम ने सफलता प्राप्त कर ली यहां पर। चलिए वो 30वां अर्शतक बनेगा नहीं, साहिल को 41 पे जाना होगा। एक बड़ी हिट लगाने गए, इसी के साथ विकेट का पतन। बड़ा हिट लगाने गए,
स्लॉक स्वीप खेलने का प्रयास और स्टंप्स के सामने आएगा और एलबीडब्ल्यू होते हुए। जी हाँ बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं कि इन स्टंप्स पे जाके लगती। बड़ा अच्छा फैसला अंपायर का। चलिए अब टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज अग्निव आए बल्लेबाजी करने के लिए। शॉट बढ़िया है पर लेकिन पीछे फील्डर भी है, एक ही रन मिलेगा। अग्निव ने अपना खाता खोला सिंगल के साथ। नदीम ने भले ही चौका खाया ऊपर लेकिन उसके बाद बड़ा विकेट प्राप्त किया साहिल का। धीमे हाथ से खेला, कोई रन नहीं। बढ़िया ओवर यहाँ पर नदीम मलिक का, 7 रन 1 विकेट। 8 के बाद 83, 3 विकेट के नुकसान पे। Abhijit has now been introduced into the attack. That's been played straight to the field for no runs. Fielder at point. Abhijit Raba. Played with the soft hand, going for a quick single, and he picks up a single over there. Umang Sharma batting on 16. His partner Agniv on 2 is just walked in after dismissal of Sahil in the last over. A little bit innovation, playing that reverse paddle for a single because he's not offering much pace. So he will just get a single over there. That's a lovely drive. But can't beat the fielder in the D. Will just be a single.
Agni thought for the second, but second wasn't possible. Good call from Umang over there. ये कॉल बड़ा अच्छा था, इसमें कोई दोहराया नहीं. This time playing onto the front foot to pick up a single. दोनों बल्लेबाज अच्छी क्रिकेट इस समय खेलते हुए. जानते हैं पिछले ओवर में साहिल का विकेट गवाया था, तो दोनों बल्लेबाज यहाँ पर बड़े सूझबूझ के बल्लेबाजी कर रहे, बिल्कुल कोई रिस्क लेना नहीं चाहते. That's absolutely right. You're not trying to take any kind of a risk, and you need that partnership. After those 2 wickets were down early at 24, then it was Sahil and Umang who got a partnership, and now when Sahil has got out, now it's up to Agni and Umang to get a partnership in over here, because this is a big game, do or die game. Win gives them a place in the semi-final, and if they don't, the journey will be over in the tournament. So with that, we're done with the 9 over. Score is 8 for 3. He was the man who was batting so well before getting out of 41. Sahil was trapped in front of the stumps. Nadeem was the man who got him out. And that's going to be a wide down the leg side. Just can't bowl over there. They've bowled too many wides. You've seen Swapnil bowling a couple of wides, and now Nadeem bowling it down the leg side. Things hasn't looked that good over here for AAI. They might have picked up wickets, but they've given away runs also. Not to forget that. Again, easily played away towards the onside to pick up a single. Score is 90 at the moment on the board. We enter the 10th over after the 10 more overs to go. And we know that FCI has got a long batting lineup. Two experienced campaigners, Rajinder and not to forget Captain Chetan Sharma, and then the man who has been scoring the runs with the bat and doing the job with the ball, Vishal Bhadi. He got 38 not out in that run chase of 199, and yesterday he got 40. He tried his best with Swastik, but the target was too big for them. And appealed, but the impact is way outside of stump. जब बिल्कुल इम्पैक्ट ऑफ स्टंप के बाहर था यहाँ पर, जैसे नजर आया. क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं विशाल. गेंदबाजी में भी कमाल कर रहे हैं, तो बल्लेबाजी से भी कमाल कर रहे हैं. This time we saw him using his feet, so just dragging that length, and that just forced the batter to play it away for a single. अच्छी सोच बूझ के गेंदबाजी कर रहे हैं. आखिरी समय तक देख रहे हैं बल्लेबाज करने का क्या प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर, और उसके हिसाब से परिवर्तन कर रहे हैं अपने लेंथ और लाइन में. He goes big, and this is sailing into the crowd. What a shot from Umang against Nadeem. क्या बिल्कुल बहुत जल्दी पोजीशन में आ गए थे. थोड़ी सी हवा जरूर दी थी, वो थोड़ी सी हवा काफी थी गेंद को हवा में भेजने के लिए और दर्शकों के बीच भेजने के लिए, और ये गेंद तो मैदान से बाहर जा चुकी है. दूसरी गेंद ली जाएगी अंपायर के द्वारा. पिछले मैच में लय में लौटे थे, 46 की बेहतरीन पारी खेली थी इन्होंने, और उसको बरकरार रखते हुए यहाँ पर उमंग. बड़ा नाम, बड़ा प्लेयर, उसको एक अच्छी इनिंग की जरूरत होती है वापस लय में आने के लिए. Clever cricket. This is what you call a smart cricket. After getting a big one, he just picks up a single. We are done with 10. It is 99 for 3.
2 wickets for Divyansh Rawat, 1 wicket for Nadeem. Economical bowler was Abhijit, who just bowled 1 over. He's going to bowl his second over. Nadeem might have picked up a wicket, but he's been on the expensive side. The best partnership for the third wicket of 58. Umang trying to be a little bit innovative, trying to reverse paddle that one for a single or maybe 4 if he can get it past that short third man. Played it with a soft hand, going for a quick single. And 100 up with that for FCI. Hundred for 3. That's a sweet sound of the bat. And that is in the gap for 4 runs. Lovely sweep shot from Agnev over here. जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्या कमाल का शॉट था ये. बहुत जल्दी पोजीशन में आ गए और उसको स्वीप किया बड़ी ताकत से. कोई मौका नहीं पीछे जो फील्डर मौजूद थे उनके पास. 4 रन यहां पर बटोरते हुए अग्निव. And next ball, an appeal for a leg before. Not outside the umpire. कहीं ना कहीं इम्पैक्ट थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर होगा. वही बचाव कर गया इनका. This time plays a cut shot but finds the fielder. यार देखिए आप पहले जिस तरीके से पोजीशन में आए थे मन बना लिया था स्लॉग स्वीप लगाने का. फिर देखा गेंदबाज ने थोड़ी तेज करी और ऑफ स्टंप के बाहर करी तो कट करने गए. उसे रन मिले नहीं. Played with a soft hand and he'll pick up a single of the last ball. So 11 done. Score is 1 of 5 at 3. There is going to be change in bowling, as Nadeem has been taken off the attack. They've gone to another left arm spinner. That is going to be Aman Chaudhary. That's a good shot. A bit short in the length over there. But that was played away towards the deep square leg for a single. थोड़ी सी निराश होंगे यहाँ पर अग्निव की छोटी गेंद थी. पीछे एक फील्डर था, उसे थोड़ा सा दाएं बाएं खेलते तो चौका मिल जाता. Now Umang. A lot of hopes are on this man now. This partnership is really going on well. It's developing well over here. That's in the air and taken. So the man who was just looking dangerous, trying to go over the covers, and Ayush in the covers takes a good catch. जो ऊपर कराई हुई गेंद थी, बड़ा शॉट लगाने गए और सीधा आयुष को ढूंढ निकाला यहाँ पर कवर्स में. बढ़िया कैच आयुष के द्वारा. एक और झटका लगता हुआ एफसीआई को.
चौथा विकेट 106 पे गिरता हुआ। उमंग को जाना होगा 27 रन बनाकर वापस। That's a big wicket. They're holding Vishal because they know that they need someone who can get those big hits in the last 3 overs. This team has been giving runs, but they're also picking up wickets. The moment you feel that this batter is going to get a big one, and that's the moment they get him out. Captain has walked out in the middle, and now the other captain, Krish, just walking to Aman and giving him some advice. Because the left arm spinner is bowling, so that's why the captain has walked out in the middle, a left-hand batter. He hasn't done much batting in the tournament because the top order has been firing for them. Plays it with a soft hand. He will take his time, but once he gets his eye in, he can hit those big hits quite easily. He's that kind of a batter. Tall fellow. Oh, just surprised him with that one. Bowling that bouncer over there, and that dipped rather than climbing. And that is why captain couldn't get the shot and a dot ball. That's another wide down the leg side. Today, this man behind the wickets have been quite busy. Yashowardhan. It's been real test for him behind the stumps today. The bowler's been bowling down the leg side. Shout for a leg before. The bowler thinks he's got his man, but the man who matters the most says it's not out, man. Yeah. नी रोल के आसपास वो गेंद लगती हुई इस तरीके से गेंद घूम रही है, अंपायर को विश्वास था ये गेंद लेग स्टंप मिस कर जाती. Now there's one more change in the field. They have a short third man. And the moment he removes the fielder from there, and the ball has gone through that region for 4. आखिरी गेंद के लिए फील्ड में बदलाव किया, फील्डर को वहां से निकाल के शॉर्ट फाइन लेग पे भेजा, शॉर्ट फाइन लेग की फील्डर को शॉर्ट थर्ड मैन में भेजा, लेकिन चौका वही गया जहां से आपने फील्डर को हटाया. कप्तान बड़ी जल्दी पोजीशन में आ गए और जड़ दिया 4 रन. 12 के बाद 111, 4 विकेट के नुकसान पे. That's a good delivery. Played into the covers for no runs. Ayush is there. That's a good shot into the offside. Will just be a single.
That's off the back foot, and that's going all the way for a maximum. What a shot! How quickly he gets into the position. The man who wasn't getting too much batting, today's got a chance, and he's showing his skill. That has been put away by Agni for 6 runs. जबरदस्त शॉट, बहुत जल्दी लेंथ को पढ़ लिया और जड़ दिया 6. Another good shot, but this time Ayush is there in the covers, won't get the run. What a shot! What a shot! Delightful drive. Nobody moved. That's a cracking shot through the offside. This man is showing his skills over here in the big game. It's a do-or-die game. Lovely cover drive. And with that, 13 overs are done. Score is 123 for 4. Nothing back into the attack. And captain plays this one straight to Ayush. That shot mid-wicket for no runs. In the last over, we saw 2 cracking shots from Agnev, a 6 and a 4. Captain goes big, but he misses the line, and the furniture has been disturbed over here. Number 5 goes down with that. Second one for Nadeem. Captain just losing his patience. Just looking for a big one. बहुत बढ़िया गेंद यहाँ पर. बल्ले और पैर के बीच से गेंद निकल गई. एक बड़ा हिट लगाने गए कप्तान. गेंद की लाइन तक पहुंचे नहीं, लाइन में आई नहीं और गेंद स्टंप से टकराई. इसी के साथ एक और विकेट का पतन. The man who fired 38 not out in that run chase of 199. And then yesterday when they were chasing 235, he got important 40 runs. Is now out in the middle, Vishal Bhadi. Yeah, बिल्कुल बढ़िया लैम है. विकेट्स भी ले रहे हैं, रन भी बना रहे हैं. इसीलिए आज इनको रोक के रखा था कप्तान ने. अंतिम ओवर्स में एक बड़े हिटर्स की जरूरत है, इसलिए आज इनको नीचे भेजा है फिर से वापस बल्लेबाजी करने के लिए. कल प्रमोट किया था ऊपर.
What a shot. A man who's in confidence. He's played a confident shot and they're coming back for a second. Excellent running. Wonderful running between the wickets. जबरदस्त कमाल की दौड़ विकेटों के बीच यहां पर पहली गेंद पे क्या कमाल का शॉट खेला, कलायों का अच्छा इस्तेमाल किया वहां पर और 2 रन प्राप्त करते हुए अपना खाता खोला यहां पर विशाल ने। अब एक फील्डर और तैनात किया ऑन साइड में विशाल के लिए। ये बेहतर लाइन, थोड़ा धीमा डाला, लेंथ को खींचा, जैसे गति प्रदान करते तुरंत बल्लेबाज टूट पड़ते हैं। ये गेंद घूमी भी और उछली भी। सीधे बल्ले से खेला, 1 ही रन मिल पाएगा। बल्ले के बीचों बीच लगी नहीं गेंद और वैसे ज्यादा ताकत से मारने गए भी नहीं वहां पर विशाल, बस गेंद को टाइम करना चाहते थे। And now on strike, the man who finished the last over, last ball with a boundary, Agneev. That's a good short arm jab. He finished the last over, last ball with a 4. He finishes this over, last ball with a 4. जबरदस्त बल्लेबाजी, पिछले ओवर की आखिरी गेंद पे भी चौका जड़ा, इस ओवर की आखिरी गेंद पे भी चौका जड़ा। 14 के बाद 130 5 विकेट के नुकसान पे। Change in bowling. Aman being taken off the attack because it's 2 left-handers batting out in the middle. They have gone to the off spinner, Abhijit and Abhimanyu, who's standing at short fine leg. Maybe he's looking at his captain when he's going to bring him back into the attack. Today, it's Krish Yadav who has taken that responsibility of captaining the team over here. Oh, that's a gift. That is a gift. And a man who is in a superb form is not going to miss out. ये तो तोहफा है विशाल के लिए, जो अच्छी गेंदों पे छक्का लगा देते तो इस गेंद पे कैसे चूकेंगे वो। एक और गेंद मैदान से बाहर। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभिमन्यु और स्वप्निल लगातार स्कोर बोर्ड की तरफ नजर रखते हुए 136 15वां ओवर चलता हुआ। इस प्रकार से अगर बल्लेबाजी चलती रही तो 192 बनाएगी ये टीम। He's bowling his last over, 29 without a wicket. That was amazing shot from Vishal.
That is played off the back foot for no runs. That has been played into the offside. Picks up a single. That has been played away into the onside for a single. That's a good running. Excellent running between the wickets. 15 overs are done. Score is 140 for 5. Two wickets for Divyansh. 2 wickets for Nadeem. 1 wicket for Aman Chaudhary. Economical bowler over there. Couple of bowlers were just below 9 runs per over. Best partnership 58 between Umang and Sahil for the 3rd wicket. Now this is going on well between these two. Nadeem to bowl his last over, 25 at 2. That's played well, quite easily towards the onside to pick up a single. That's played off the back foot, going for a quick single. He gets a single quite easily over there. Yeah, dealing in singles in this over till now. So Nadeem has really been bowling well over here till now in this over. Hasn't given that to length, that line where the batter can execute those big shots. Another one where he forced the batter to play it towards the onside. Just push it or maybe time it for a single. He hasn't given that kind of delivery where we could have seen a batter going for a big shot. It's been all soft hand drop or timed for a single shot. Again, went for the big one, changed his mind at the last moment. Underage onto the stumps. He gets a big one, number 3 for Nadeem over here. ये बड़ी हिट लगाने का प्रयास था, फिर देखा गेंद घूमी और जब तक गेंद को छोड़ते तब तक अंदरूनी किनारा लग के गेंद स्टंप पे चली गई. बहुत बड़ा विकेट. विशाल यहां पर आउट होते हुए, जिनसे बहुत उम्मीदें थी.
हाँ, ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, एक छक्का लगाया अब अपनी पारी में और नदीम को ये तीसरी सफलता मिलते हुए। 12 रन बनाकर वापस लौटे विशाल भाटी। चलिए, टीम के एक्सपीरियंस कैंपेनर राजेंद्र बिष्ट आए हैं अब। "28 for 3" is really bowled well. That's been a good sweep shot, but he'll just pick up a single. Parv over there in the deep. He's the man to watch out when they will come for the run chase. That's a good one. A wonderful spell from Nadeem Malik. 4 overs, 29 for 3. Forcing Agnew to play a defensive shot. 4 more to go. It is 144 for 6. Par Singler now coming into the attack. 4 ओवर का खेल और बचा, 144 पे 6 पर वहां स्वीप किया इस गेंद को। बड़ी तेजी से रन दौड़े यहां पर, 1 रन पूरा कर लेंगे। फील्डर वहां पर मौजूद थे शॉर्ट फाइन लेग पे, 1 ही रन मिल पाएगा। स्वप्निल के द्वारा बढ़िया फील्डिंग, पर बल्लेबाजों को सिंगल रहने से रोक नहीं पाए। ये शॉट बैकफुट पे जाके आसानी से खेल दिया लॉन्ग ऑन की तरफ 1 रन के लिए। गेंदबाजी अच्छी करते हुए यहाँ पर शुरुआत अच्छी की है, पहली 2 गेंदों पे 2 सिंगल, क्योंकि आखिरी ओवर चल रहे हैं, स्लॉग ओवर चल रहे हैं। बड़ी हिट लगाने अभी तक दिया नहीं बल्लेबाजों को। ये बड़ा हिट लगाने गए, गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर से लपेट के ऑन साइड पे खेलना चाहते थे, डॉट बॉल। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत धीमा छोड़ रहे हैं गेंद को यहाँ पर। थोड़ी सी कहीं ना कहीं दिक्कत है बल्लेबाज ने, अंपायर को आगे एक बार गेंद देख लीजिए।
वो कप्तान यहाँ पर आ चुके हैं अंपायर के पास, कहते हुए दिक्कत है क्या गेंद में। देखना अंपायर का क्या फैसला होता है। अगर अंपायर को कहीं ना कहीं दिक्कत नजर आई है गेंद में, अपने साथी से यहाँ पर सलाह जरूर करेंगे। उसके बाद अगर दोनों का फैसला ये कि गेंद में थोड़ी सी दिक्कत है, बदलनी चाहिए, तो फिर बदलेंगे ये गेंद को। और एक चीज और चर्चा कर रहे हैं, क्या वो जो गेंद उन्होंने गेंदबाज की तरफ फेंकी थी, क्या उसमें उन्हें हैंडल द बॉल आउट दिया जाएगा। गेंद के साथ तो कोई दिक्कत है नहीं, कोई समस्या है नहीं, लेकिन विकेट का क्या फैसला होता है। क्या यहाँ पर बल्लेबाज ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड चलते आउट दिए जाएंगे या फिर नॉट आउट। चलिए नॉट आउट का इशारा अंपायर का। हैंडल द बॉल को भी अब ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के लॉ डिसमिसल में इंक्लूड कर दिया गया। एक समय हैंडल द बॉल ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड दोनों अलग अलग थे, पर लेकिन अब उन एक ही कैटेगरी में यहाँ पर आईसीसी ने अब नियुक्त कर दिया है कि चाहे वो हैंडल द बॉल हो चाहे ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड, उनको आउट ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड ही दिया जाएगा। गेंद गई है शॉट फाइनल की तरफ 1 रन के लिए। गेंद डेड होने के बाद उसके बाद आप गेंद को लौटा सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। बैकफुट पे गए आसानी से सिंगल प्राप्त करते हुए। That just will be a single. 17 done. Score is 148 for 6. Yes, first it was the call for the ball. The ball was okay, and then he went to his partner to have that confirmation. Was the ball dead? And then he threw the ball, and the square leg umpire said yes, he was inside his crease, and the ball was dead. And after that, he just threw the ball back. So that's why he was given not out. बदलाव यहाँ पर गेंदबाजी में हुआ है। दिव्यांश जिन्होंने बढ़िया गेंदबाजी की पावर प्ले में। अब डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करने आए, 2 ओवर बचे इनके, तो ये तो तय है कि अगर इस ओवर में ज्यादा रन नहीं खाएंगे तो फिर 20वां ओवर भी यही करेंगे। और कई बार गेंदबाज रन देने के बाद भी कप्तान का विश्वास ये होता है कि आखिरी ओवर बढ़िया करेंगे वो, कई बार वो विश्वास काम भी कर जाता है।
पहली गेंद को इतनी अच्छी तरीके से टाइम नहीं कर पाया, डॉट बॉल। और इस समय पे आप जबरदस्ती का एक रन देना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आप चाहेंगे ज्यादा स्ट्राइक राजेंद्र के पास हो, अग्नीव को स्ट्राइक से दूर रखा जाए। राजेंद्र भी प्रयास यही कर रहे हैं कुछ बड़ी हिट्स लगाए जाएं। एक फाइन खेला इस गेंद को, लेकिन अच्छी कप्तानी, फाइनल को ऊपर रखने के बजाय पीछे रखा है उन्होंने, इसलिए एक ही रन मिल पाएगा। 150 रन पूरे होते हुए यहाँ पर एफसीआई के इस एक रन के साथ, और अब अग्निव स्ट्राइक पे आते हुए। बदलाव जरूर देखने को मिलेगा यहाँ पर फील्ड पे। अग्निव अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 33 पे बल्लेबाजी कर रहे, 26 गेंदों का सामना किया है, और ये चाहेंगे इन बचे हुए कुछ ओवर्स में 25 से 30 रन जोड़ लिए जाए। ये गेंद हवा में उड़ी है, और क्या ये यहां पर रन बचाए हैं अमन के द्वारा, बेहतरीन एफर्ट। जी हाँ बिल्कुल, 5 रन बचाए अपने टीम के लिए। गेंद धीरे धीरे जा रही थी 6 रन के लिए, गेंद की तरफ दौड़े, कैच जरूर पकड़ लिया पर, लेकिन जैसे एहसास हुआ कि सीमा रेखा से बाहर जाएंगे, गेंद को तुरंत फेंक दिया हाथ से मैदान के अंदर, 5 रन बचाते हुए। एक और अच्छी गेंद, जिसको सिंगल के लिए खेल दिया आसानी से राजेंद्र ने। तो ये बढ़िया ओवर अभी तक जाता हुआ दिव्यांश का। क्या कमाल का एफर्ट देखने को मिला वहां पर अमन के द्वारा, सही समय पर गेंद को मैदान के अंदर फेंकते हुए, सीमा रेखा से बाहर जाने से पहले गेंद को उन्होंने अपने से दूर फेंक दिया, गेंद को हाथ में रखा नहीं गेंद को। शॉट करा रहा है, पर पीछे स्वीपर कवर भी मौजूद है आदित्य, एक ही रन मिलेगा। यहाँ पर लगता है कहीं ना कहीं बल्ला लगा है। जी हाँ, इसीलिए अंपायर का फैसला नॉट आउट था, क्योंकि बल्ला लगा देगा, आवाज जरूर आई थी। 18 के बाद 154 6 विकेट के नुकसान पे।
19th over starts with a wide perf into second or first over was a good one. That is been played into the gap of 4 runs. That was really good shot from Rajendra Best for 4 runs. Sweeps this one. But this time there is a fielder in the D. Will just be a single. Satya over there does well. That will just be a single. Seven has come from the 3 balls over here. That has been cut away for a single. Oh, they're coming back for a second. Excellent running. Good awareness from Agni, forcing his partner to come back for a second. The runs are coming in this over. That's a dot ball, final in the over. With one more ball to go, 163 for 6. Looking for a big shot. There was a turn. The moment you bowl slower, it turns. This could be another wicket. And yes, gone. Number 7 is down with that. Looking for a big one. 19 done. Score is 163 for 7. Looking for the big one. And he lost his bat on the way while coming back. And easy work by the wicket keeper. Yashovardhan gets the job done behind the stumps. There was bounce. That's why it took it time to get his gloves onto the stumps. 19 done, 163 for 7.
आखिरी ओवर इस पारी का 163 पे 7। दिव्यांश ने 2 विकेट लिए, 22 रन देके बढ़िया गेंदबाजी की इन्होंने पावर प्ले में। पिछला ओवर भी जबरदस्त था। एक और अच्छी गेंद, फुलर लेंथ, 1 रन प्राप्त करते हुए यहाँ पर जयेश नए बल्लेबाज जयेश पोखरे। That's a good shot. What excellent fielding from Krish, the captain, doing a wonderful job saving couple of runs for his team. बढ़िया एफर्ट कप्तान के द्वारा, वहां पर कुछ रन बचाया अपनी टीम के लिए। ये शॉट बढ़िया था। एक समय ऐसा लगा कि 4 रन मिल जाएंगे, पर लेकिन कप्तान ने क्या कमाल की फील्डिंग की, 2 रन बचाया अपनी टीम के लिए। यहां पर 4 मिल जाएंगे। फुल टॉस गेंद बल्ले के बाहर हिस्से पे लगने के बाद डीप थर्ड मैन की तरफ जाते हुए 4 रन के लिए। उम्मीद कर रहे थे नो बॉल होगी, पर लेकिन अंपायर का इशारा लीगल बॉल है ये। तीन गेंदें और बची हैं इस पारी की। 170 तो लग चुके हैं। जिस तरीके से विकेट स्पिनर्स को मदद कर रहा है, तो आसान होगा नहीं ये लक्ष्य को हासिल करना। धीमी गति की गेंद, और ये कीपर गेंद को अपने हाथ में रख बैठे, जिसका फायदा पूरा उठाया बल्लेबाज अग्निवीर, और 1 रन बाई का चुरा लिया। यहाँ पर थोड़ी फुर्ती दिखाने की जरूरत थी विकेट कीपर को। ये जानते हैं कि आखिरी ओवर में बल्लेबाज कोशिश करते हैं कि हर गेंद पे जैसे मुमकिन हो वैसे रन लिया जाए। बढ़िया स्कोर लगा चुके स्कोरबोर्ड पे 171। ये बढ़िया शॉट, क्या बढ़िया अंदाज में स्कूप किया है। 4 रन मिल जाएंगे। बहुत जल्दी पोजीशन में आ गए थे, गेंद के लाइन में आया, गेंदबाज की गति का इस्तेमाल किया और 4 रन के लिए स्कूप कर दिया फाइनल के ऊपर से। आखिरी गेंद इस पारी की। सीधे गेंदबाज के पास डॉट बॉल के साथ ये पारी समाप्त। 175 बनाए हैं 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पे। 176 रन का लक्ष्य दिया है एआई को।
बढ़िया बल्लेबाजी की अग्निव ने, 41 बनाए 31 गेंदों में। दोनों बल्लेबाज वापस लौटते हुए अपने डगआउट में। अग्निव जबरदस्त बल्लेबाजी इन्होंने की है, 41 महत्वपूर्ण रन बनाए 32 गेंदों में, और एक अच्छा स्कोर यहाँ पर खड़ा किया यहाँ पर एफसीआई ने। अब देखना ये बल्लेबाज जब बल्लेबाजी करने आएंगे तो क्या ये लक्ष्य को हासिल करते हैं या नहीं 176 का। नजर डालते हैं बैटिंग कार्ड में यहाँ पर एफसीआई के। ये चर्चा तो जरूर कर रहे हैं यहाँ पर, स्वप्निल है, अभिजीत है, उनके बगल में अभिमन्यु है। स्वप्निल और अभिजीत थोड़ी चर्चा करते हुए। तो चलिए इस बीच नजर डालते बैटिंग कार्ड पे। सर्वाधिक रन बनाए यहाँ पर अग्निव ने 41 नाबाद, और साहिल ने भी 41 बनाए पर वो आउट हो गए। 27 रन बनाए उमंग ने, वो अच्छी बल्लेबाजी करते, और दो छोटी छोटी पारियां देखने को मिली विशाल और राजेंद्र के द्वारा, जिसके चलते 175 रन बनाए हुए 20 ओवर में यहाँ पर एफसीआई। गेंदबाजों की बात करें तो नदीम ने कमाल की गेंदबाजी की यहाँ पर, 3 विकेट उन्होंने चटकाए, 2 विकेट दिव्यांश को मिले, वहां पर एक एक विकेट अमन और पर्व को। तो 176 रन का लक्ष्य है। एक नजर डालते हैं हाईलाइट पे, उसके बाद मिलते हैं आपसे रन चेज में। धन्यवाद।
Welcome back for the run chase. 176 is the target over here. Will they get there? Will be important to see. It's going to be wicketkeeper batter Yashwardhan indeed, and his partner at the other end. It's going to be Parv Singla, captain not opening the innings today. Vishal Bhatti will start the proceedings over here. First ball in the air, but in the gap. And that won't rest with the fence because they do have that protection in the deep. Swastik over there will just be a single. That's well played. For no runs. Doesn't get anything on the bat. This is good thinking from the captain Chetan Sharma, that knowing that the wicket was helping the spinner, so he's starting with spin, not offering any kind of pace to the batters. That's a good shot, but straight to Sahil for no runs. This is what it becomes difficult when the wicket is assisting the spinners, and there's a little bit turn and the ball is slowing down in the surface. It becomes difficult for you to hit the shot with your own power. This time getting to that slip fielder Rajendra Bisht over there in the first slip. A good over, quite over till now from Vishal. Just one run of the first ball. Going for a quick single, and Parv gets off the mark. So 1 over done, score is 2 without loss. .174 more needed of 114. Single picked up over there. Ishant was expensive in the last game.
against CAG. That's well played with a soft hand. This time captain has pushed himself down the order just to strengthen that batting lineup. He sent Yashwardhan Oberoi to open the innings with Perv. In the last games, what we have seen, it's been Perv and Krish opening the innings. But in that game, it was Ayush who was captaining the side. Today, it's Krish who's captaining the side, so that's why he's just taking that extra responsibility and he's decided to come in the middle order. Wanted to go on the up. That ball just holds up in the surface. There was a way movement. He changed his mind and withdraw from the shot. All set to play that big shot, but then he saw the ball as stocked in the surface. So just withdraw himself from that shot. That's in the air. That should be taken. And easily taken over there. This time he couldn't pull himself from playing the shot. Again the ball stopping in the surface, extra bit of bounce. Ball scooping in the air. And quite easy catch for that point fielder. Takes it quite easily over there. Number 2 is what the bowler would be aiming. He's got the first one over here. In his first over, he's provided the breakthrough, but now he would be aiming to get that second one too. Ishant has provided them the breakthrough. It's Ayush who's come at number 3. Generally would come at number 4. Oh, once again the ball holds in the surface. And that has been the problem for the batter. There you see where the ball landed. A pop of dust also coming out over there with that. Played away onto the onside to pick up a single. He will be off the mark. So 2 overs done. It's a quiet start, 5 for 1. At the same stage, FCI also lost to 1 wicket, but they had 22 on the board in 2 overs. Where on the other hand, AAI has lost 1 wicket and they just have 5 on the board. Vishal bowling a tight first over, which forced Perv to go for a big shot against Ishant, who loves pace. But again, that ball holds up in the surface, extra bit of bounce. Because the ball holding in the surface, he wasn't able to get that timing right in the air for a long time. An easy catch by that point fielder. Ankit Chatterjee taking that catch over there.
It's a risky shot, getting in the line of the stumps, going for a quick single or directed. He was gone. First played a risky shot, then went for a risky single, directed the captain. Would have seen his one of the experienced batter, Ayush, coming back to the dugout. Today he doesn't have the responsibility of captaincy. So the team would be hoping that he gets a good one today for his team and finishes with a wonderful knock this tournament and ends the team journey over here with a win. He will be key in this run chase, Ayush. But that's difficult to score the runs against spin. Once again, gripping in the service, turning away. That's a good shot. This time uses the crease so well and hammered towards the long on for 6. Rocks back and puts the power behind the shot to fetch a 6. How quickly gets into the position and is dispatched this one for a maximum. What a shot from the wicketkeeper batter, Yashwardhan Oberoi. A confident shot from Yashwardhan. Once again rocks back and this time gets it over cover point. This time through the offside. A 6 followed by a boundary. How well he's made a use of that crease in the air, but it was traveling over his hands. Good effort there from cover point fielder. It was the captain himself over there. And then played a good cricket, going for a quick single. Excellent bit of running between the wickets by both these batters. They've got a good understanding. The moment the batter played with a soft hand, Ayush was ready for a single. Well done, dragging the bat from outside the crease. Good running. They needed one good over to get the momentum. And they've got 12 of this one with the ball still to go. That's in the air, but that is away from the fielder. And fielder in the deep does well. Ankit Chatterjee over there, just a single. So third incoming of this one. We're done with 3. It is 18 for 1. That's Manhattan. 14 of the first over for FCI. On the other hand, AI got 2, then 8, then 3 for AI, and then it was 3 runs for FCI. And now it's a Blue Tower, which has got 13. The first 2 overs, you could say that it belonged to FCI when they were batting, but then the third over was for AI. And now while batting, AI in the first 2 was quiet, but in the third over they've shown some aggression. That will be called a wide down the leg side. Good take from the wicketkeeper, Agnev.
It was moving down the leg side. These kind of deliveries, I would say the bowler is lucky that the batter did not get a fine tickle. That's been played off his hip towards the onside. Good effort there from the fielder in the deep. 2 more runs to the total. But the effort was really good one, saving a couple of runs for his team. Captain and everyone appreciating that effort. And Agnew is telling, where are you bowling, man? You're bowling him on his legs. Just be around that off and middle stump. This line becomes more easier for him. Just playing towards that deep square leg, using his wrist at the last moment for 2 runs. That's played with a soft hand, won't get the run. Sile is there, quick onto the ball. Once again played it of his hips towards that deep square leg for a single. So he's trying to cramp him for room. That's good thinking from Ishan, but he needs to make sure that he's finishing the ball onto the middle stump, not on the leg stump or down the leg side, which becomes easier for Ayush to score the runs. That's played off the front foot. Once again, top field of the bat. Try to pull the ball in the middle equation. This time late. And stop it to keeper. The ball stopped by a big one. Yeah, underage. And well done by the wicketkeeper. Another underage. A quiet over. 4 done. Score is 22 for 1.
Oh, that might go for 4. It's off the leg, boys. It doesn't matter. They will still take the runs. That's a boundary. Quite easily done. Just onto the leg stump, Karthik Yadav coming into the attack. Goes for another big one, but this time doesn't make any kind of connection. That's played away into the onside to pick up a single. 27 on the board. Still a lot of runs needed. 149 of 93 balls with 9 wickets in hand. That's in the air. Doesn't carry to Rajendra. That short third man. Agnew is telling Rajendra, you could have easily dived in the air. After putting that dive, you could have easily taken the catch. A shout for a leg before. Not out, says the umpire. Oh yes, that was missing the stumps. That was turning. Good decision. The impact was way outside of stump. Good one from the umpire. That was turning away. If that would have been arm ball, he could have had a wicket. This time, it doesn't come as much he was thinking when he bowled the arm ball. A dot ball to finish 5th over, 27-1. That has been played away. And Rajendra Bish really does well at short fine leg. Good fielding from the experienced campaigner. The old horse is putting his effort over there in the field. That was a good effort there, saving a couple of runs for his team. Goes for the big one. Looking for that uppercut. Doesn't get anything on the bat. Extra bit of bounce and the ball was moving away. This is good bowling from Ishant. He's kept one end tight and has picked up 1 wicket.
Vishal, except that 1 over, has also bowled well, tight line and length. That's a good shot. Pulled off the front foot towards the cow corner. How quickly gets into the position. Gets it sweetly in the gap. May not be from the sweet part of the bat, but was sweetly stroked in the gap for 4. In the air and doesn't carry to Ishant. Once again the ball holding in the surface and the batter closing the face of the blade too early. A leading edge. Good try from the fast bowler, but just falling short of him. Goes for the big one. This is the problem. Couple of balls are coming at a good pace of the surface. Then all of a sudden you see a couple of balls just stopping in the surface. That is where the batter isn't sure which ball they should trust, whether it will come at a good pace or will it stop in the surface. That's a good shot. One bounce into the fence. The power play finishes off with a boundary. Going for a wicket, pitching the ball up. And Yashwardhan was ready for this one. Makes room and gets it over covers for 4 runs. 36 for 1 after 6. Starting with a wide over here. Karthik Yadav into his second over, first over. So 1 run of a bat, and then we saw 1 boundary in that over, but that was of a leg bar. Or he was looking where to throw, and he doesn't get the throw over there. A single picked up over there. What a shot! In the slot, in the park. 6 runs over there. They're going at 6.95. The required 100 is 9.66. Went for a wicket and treated with a 6 by the batter Yashwardhan over here.
Down the ground he went. Over long on for a 6. And then a good comeback. The moment you drag the length, it becomes a little bit difficult for the batter to put the ball away against the spinners. Late cut. And it's gone straight to the captain at short third man, where he'll pick up a single. In the air, and it's off the pad, says the umpire. Not out is the call. Yeah, good call. It's off his thigh. And he's got him. And a wicket at the right time for FCI. Ayush has to go back, showing his leg stump. The ball turn and getting bowled round his legs over here. And he can't believe it. And how much has he shuffled on the offside, where you could see his middle and leg stump. And the ball going onto the leg stump. 7 done, score is 45-2. The man who has always done the job with the ball, Rajendra Bish, now into the attack. It's the captain, Krish Yadav, who's walked out in the middle. He's got a big job to do. Will it be Krish? Will it be Rajendra Bish? Who will be dominating the game? One has the ball in his hand, the other has the bat in his hand. He's bowled so well in the tournament. Today things are different. It's a big game. It's a do or die game. One team playing for the pride, one team playing for the spot in the semi-final. Yashvardhan batting well till now. He's batting on 28 of 20. That's been played away into the onside in the air for a while. Doesn't get to the field. But he does pick up a single because that went to that field on a couple of bounces, not directly into his hands. And gone! Rajendra gets the captain out for a golden duck. So he gets his man, he gets a dangerous man. Once again, celebration time. Whenever the captain seems to come into the tag to pick up a wicket, he gets his man.
Krish Yadav has to go for a golden duck. He wasn't happy with the decision. Aditya. Is the new bat who's walked in. He plays this one along the carpet to get off the mark with a single. Aditya over here. Aditya Narvade now needs to get a partnership here with Yashwardhan. He's batted well whenever the team required runs. That's a good shot. Just gets onto the front foot and has put this one for a maximum to raise the 50 of the team. He's still fighting. What a shot. Quickly gets in the line of the ball. One step ahead and then puts this one for a maximum. This time should be taken. And Sahil on the second attempt completes the catch. Wicket goes down. The man who was looking dangerous. Rajendra gets his second wicket in the same over. That was in the air for a long, long time. And taken on the second attempt by Sahil. 53 for 4. After 8. Yashwardhan Obrai gone. The last batter dismissed. And this is how he picked up that second wicket in the over. Once again, the ball just stopping in the surface. That's why he couldn't generate that power. And Sahil on that second attempt completed the catch over there. 8 done, score is 53 for 4. Abhijit Rabha is the new batter who's walked out in the middle.
Just playing this one to Rajendra Bisht at short third for no runs. That's of the underage towards the short fine leg for a single. Captain is there. That's the leg spin which just went down the leg side. Another leg break. Put away into the onside. There is a protection. Ishant is there. Will just be a single. That's a good one. Just turning away. Spinners have really bowled well on this surface today. Trying to do something different, but gets nothing. A dot ball. Went for that switch hit. Gets nothing. Under edge. And that will be lucky runs. You can't help with that kind of shot. Nor the bowler nor the wicketkeeper can do anything. 9 done, score is 60 for 4. Those are lucky runs. Still they need a lot of runs. 116 of 66 balls. He bowled well in his first over. He was hit for a 1-6, but he picked up the wicket immediately. Been hit for a 6 of the next ball, getting rid of that dangerous Yaswardhan. Was getting out, Captain Krish Yadav. Goes for the cut, gets nothing on the bat. And that ball just kept on going away from the left hander and keeping low over there. That's been put away for a 6. Pick that slower delivery and allow the ball to come close to him and then slogged it for a maximum towards that cow corner region. What a shot. The ball has gone out of the ground. Another ball will be taken over here as that ball has gone out of the ground.
These two can do it. They've got that ability. Aditya, who plays his domestic cricket for Vidarbh. Abhijit trying to give him a good support over here. Slower delivery played away off his legs. There is a fielder in the deep, so he'll just pick up a single. It's Sumang over there in the deep. Under edge for no runs. Oh, struck with a lot of power. A late reaction from the bowler. He got his hands to the ball. It's a difficult catch, you have to say, in your follow through to take. 10 done, score is 68 for 4. Struck with a lot of power. He tried his best. But these catches are not taken. These catches are those kind of catches which get struck in the hand. 10 done, score is 68 for 4. Jayesh, impressive bowling till now from him. Leg spinner has really bowled well. That's another googly. An appeal for a caught behind by the wicketkeeper, but the bowler knew there was nothing off the bat. He's bowling those googling very well over here, taking the ball away from the left-hander. Back of hand. Goes for the big one. Doesn't make any connection. He thought he's bowled him, but there was nothing on the stumps. He just went past the stumps. That was a leg spin. And he thought he's bowled him, but the ball just going past that stump over there. That's been pulled away. And he will pick up a single over here. So 2 runs of this over from 5 balls. This is good over from Jayesh. The pressure is on. The required 100 is beyond 11.5. $11 down, score is 70 for 4. Once again, sharp turn, bounce. It's difficult to score the runs against spinners.
That's going to be wide down the leg side. He doesn't start that well. Just bowling it down the leg side. Wicket keeper just in some pain. A missed time shot. Wanted to go somewhere else. The ball went somewhere else. Vishal is there at long on. Will just be a single. From FCI also 4 wides also considered by them till now. Looking to go for the big one. Doesn't make any connection. They know it very well. They need to get 2 big hits every over if they want to win this one. That is left in the hope that it could be a wide. But it was just inside that wide line. Innovation, but the result is 0. It's a dot ball. This man has really bowled so well in this tournament. And that's been slammed. One bounce to Vishal at long off for a single. And he has always been that go-to man for his captain. I need wickets. Captain says, don't worry. We've got Rajendra Bisht. And Rajendra Bisht says, don't worry, Captain, I'll do the job. Goes for the big one. The connection is big one. Yes, the connection was really good one to give him that big one over there. 6 to finish the over. How quickly he got into the position. It wasn't that short, but it's put this one away from towards the mid-wicket. 79 before after 12. Another ball lost. पिछले ओवर की आखिरी गेंद पे बढ़िया शॉट अभिजीत के द्वारा. ये अच्छी गेंद धीमे हाथ से खेला, तेजी से रन के लिए दौड़े हैं और ये रन पूरा भी कर लेंगे. बढ़िया अंडरस्टैंडिंग. और जिस प्रकार को पिछले ओवर की आखिरी गेंद पे शॉट लगा, अब अभिजीत स्ट्राइक अपने पास ज्यादा रखना चाहेंगे. कहीं ना कहीं वो आत्मविश्वास बढ़ा होगा उनके उस शॉट के बाद. जयेश ने बढ़िया गेंदबाजी की अभी तक. तीसरा ओवर करते हुए 10 रन दिए. कदमों का इस्तेमाल किया, मिस टाइम शॉट है. गेंद पहुंचेगी नहीं फील्डर तक, लेकिन अच्छा एफर्ट. एक ही रन मिला. यहां पर कुछ रन बचाए अपने टीम के लिए. बढ़िया एफर्ट फील्डर का. विशाल भाटी ये रन भी बनाते, ये विकेट भी लेते, ये रन बचाते भी हैं.
ये बढ़िया शॉट बैकफुट पे गए, क्रीज का अच्छा इस्तेमाल किया, पीछे फील्डर मौजूद, स्वास्तिक, एक ही रन मिलेगा। दोनों बल्लेबाज प्रयास कर रहे हैं मुकाबला बनाया जाए। इस गेंद को लपेट कर बड़ी हिट लगाने गए, विकेट कीपर ने अपील जरूर की पर अंपायर ने कहा नॉट आउट। विकेट कीपर को लगा कि वो पैर उठा है, इसलिए उन्होंने अपील की और अंपायर ने कहा नॉट आउट। क्या इस बार विकेट है? जी हाँ बिल्कुल, उस गुगली पे बीट हुए, बड़ी हिट लगाने गए और आसान सा कार्य किया विकेट के पीछे अग्निव ने। तेज डाली हुई वो गुगली, अगेंस्ट द टर्न खेलने गए और फिर बाकी का काम विकेट कीपर ने किया। पांचवा झटका लगता हुआ टीम को। अभिजीत जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे वापस लौटेंगे पेविलियन। बयासी पे 5। ये वो टीम है जिसका कॉम्बिनेशन बढ़िया नजर आया लीग स्टेज में। जब से सुपर लीग शुरू हुई है तब से ये टीम थोड़ी सी अलग नजर आई है। वो बल्लेबाजी चल नहीं पाई, गेंदबाजी उस तरीके से हो नहीं पाई जिस तरीके से लीग स्टेज में इन्होंने की थी। नए बल्लेबाज आए अमन चौधरी। अब देखना होगा ये किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं और कितने बड़े हिट्स लगाते हैं। आधी टीम पेविलियन जा चुकी है। तेरहवें ओवर की आखिरी गेंद। गेंद फिर से रुक कर आई विकेट से, एक ही रन मिलेगा यहां पर और खाता खोलते हुए अमन। 13 ओवर की समाप्ति में 83 5 विकेट के नुकसान पे। इस 176 के रन चेज में टीम को सबसे ज्यादा उम्मीद जिस खिलाड़ी से थी वो पर्व से थी, जिन्होंने हमेशा बढ़िया शुरुआत दी है टीम को, पर पिछले कुछ मुकाबलों से वो खामोश नजर आए हैं और आज भी खामोश नजर आए। लगता है गेंद को लेकर थोड़ी सी दिक्कत है यहाँ पर। कप्तान गेंदबाज राजेंद्र बिष्ट ने अंपायर को कहा कि एक बार चेक कर लीजिए। दोनों अंपायर आपस में सलाह शर्वकर, दोनों अंपायर ने आपस में सलाह किया, उसके बाद फैसला किया कि थर्ड अंपायर को अंदर बुलाया जाए, थर्ड माफ कीजिएगा फोर्थ अंपायर को। अब गेंद फिर से बदली जाएगी। चलिए गेंद बदल दी गई है, ये अपना आखिरी ओवर करते हुए खरी गेंद बढ़िया थी नहीं, बच गए गेंदबाज। यहाँ पर एक ही रन मिला बल्लेबाज को।
ये शॉट कमाल का है, खिलाड़ियों का क्या बेहतरीन उपयोग किया है आदित्य ने और जड़ दिया 6 रन। जैसे बल्ले से गेंद का मिलन हुआ, वो जो मधुर आवाज निकली उसी से समझ गए थे सब कि गेंद कहां जा रही है। आखिरी समय पे कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल किया। फिर इस गेंद पे 1 रन जरूर प्राप्त कर लेंगे। ये बल्लेबाज ने अच्छी बल्लेबाजी की इस टूर्नामेंट में इस टीम के लिए। जब जब टीम दिक्कत में नजर आई है, इन्होंने कुछ अच्छी पारियां खेली हैं। हो सकता था कि आज कप्तान इनको ऊपर भेजते। ये ऑन दी ऑफ खेला, 1 ही रन मिलेगा। शॉट कमाल का है, पीछे फील्डर है और ये क्या ईशान से मिसफील्ड हुई है, जिसके चलते यहां पर चौका मिल जाएगा आदित्य को। जिस पे होना चाहिए था 1 रन, वहां मिल गए 4। कप्तान, गेंदबाज, विकेट कीपर थोड़े से नाखुश नजर आए। इस गेंद को स्वीप किया है और बढ़िया फील्डिंग। जी हाँ, कुछ अलग करने का प्रयास किया इस ओवर में। दोनों गेंदें डॉट रही हैं। ये गेंद हवा में है, साहिल उसके नीचे है और वो नहीं करेंगे कोई गलती। अगेंस्ट द टर्न खेलने गए और साहिल ने पकड़ा ये कैच पॉइंट पे। 6वां विकेट गिरता हुआ। जो टीम की सबसे आखिरी उम्मीद थी वो भी समाप्त। अब आदित्य ने थोड़ी देर के लिए एंटरटेन जरूर किया, लेकिन दबाव उनके ऊपर भी दिखा। 23 रन बनाए, 1 छक्का और 2 चौके लगाए। और अब आएंगे अगले बल्लेबाज अभिमन्यु। दशरथ विकेट पे देख क्या रहे? शैडो प्रैक्टिस कर रहे हैं पैडल करने की लगता है। रिवर्स स्वीप, सारे शॉट्स ट्राई कर रहे हैं वो विकेट पे।
शैडो प्रैक्टिस कर रहे हैं, कह रहे रिवर्स स्कूप स्कूप, और अग्निव उनको समझा रहे कि नहीं ये खेलना चाहिए इस विकेट पे। चलिए अब तो फील्डिंग करनी है, अगले मुकाबले में देखते हैं बल्लेबाजी में क्या करते हैं दोनों। आज तो अच्छी बल्लेबाजी की अग्निव ने। जयेश को दूसरा विकेट मिलता हुआ यहां पर। ये वाइड का इशारा। ओह ये कैसे चूक गई स्टंप पे जाने से, ये सोच रहे गेंदबाज और विकेट कीपर। एक बार फिर से देखिए वो गेंद, गेंद घूमी, ज्यादा दूर थी नहीं ऑफ स्टंप से। ये बल्ला बढ़िया अंदाज में चलाया है, पर लेकिन पीछे दशरथ है, एक ही रन मिल पाएगा। चलिए ओवर समाप्त, एक जबरदस्त स्पेल जयेश के द्वारा समाप्त। 4 ओवर 15 पे 2। कोई भी जवाब नहीं अमन के पास इस लेग स्पिन का। 15 ओवर की समाप्ति में 99 पे 6। साहिल आए गेंदबाजी करने के लिए। धनंजय भी फील्डिंग करने आ चुके हैं। चलिए जिन्होंने बल्ले से 41 रन बनाए, अब देखते हैं गेंदबाजी से क्या करते हैं साहिल। पर रखे यहां पर तेज करी हुई गेंद, बड़ा हिट लगाने गए, गेंद आई नहीं बल्ले पे। एक और डॉट बॉल। कहानी तो अब तक वही रही है, डॉट डॉट डॉट। और एक और डॉट लिख दीजिए। और 5वीं डॉट भी लिख दीजिए आप। बड़ी तेजी से ओवर पूरा कर रहे हैं साहिल। और ये मेडन बहुत जल्दी अपना ओवर समाप्त किया। 16 के बाद 99 पर ही अटका हुआ है स्कोर, 6 विकेट के नुकसान पे। बहुत देर से आई गेंद, विकेट से फिर से रुक कर आई गेंद। यहां लगता है अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं कि सबसे तेज ओवर किसने किया अब तक। चलिए विशाल की तरफ रुक किया है कप्तान ने। खिलाड़ियों का आखिरी समय में उपयोग किया, अमन ने 1 रन प्राप्त कर लेंगे। धनंजय जो आए फील्डिंग करने के लिए, गेंद को लौटाएंगे विशाल के पास।
पिछली 7 गेंदें रन बने नहीं एक भी इनसे। अभी प्रयास लगातार कर रहे अभिमन्यु। चलिए आखिरकार वो रन आता हुआ इनके बल्ले से 8वीं गेंद पे। पीछे फील्डर मौजूद। ये मौका है और दशरथ नहीं करेंगे कोई गलती। रिवर्स स्वीप खेलने गए, ग्लव्स पे लगकर गेंद सीधे शॉट थर्ड मैन दशरथ के पास जाते हुए। आसान सा कैच। जी हाँ, बल्ले के बीचों बीच लगती तो क्या पता 4 मिल जाते, कि वो ग्लव्स पे लगी इसलिए सीधे दशरथ के हाथ में जाकर रुकी गेंद। दशरथ के द्वारा बढ़िया कैच। यह बहुत दूर खड़े, वो अपनी जर्सी नंबर और नाम दिखाना चाहते हैं। विशाल को पहली सफलता मिलती हुई यहां पर। युवा तेज गेंदबाज दिव्यांश आया बल्लेबाजी करने के लिए। दिव्यांश रावत। चलिए आखिरी गेंद इस ओवर की। 101 पे 7। इस गेंद को आसानी से खेल दिया ऑफ साइड में। सिंगल के साथ यहां पर दिव्यांश ने अपना खाता खोला। 102 17 ओवर की समाप्ति में 7 विकेट के नुकसान पे। साहिल का पहला ओवर बड़ी तेजी से इन्होंने किया था। इस ओवर की शुरुआत वाइड से की इन्होंने। पहला ओवर मेडन था तो यहां पर रन दे दिया पहली गेंद पे वाइड के रूप में। डॉट बॉल। बल्लेबाज तैयार नहीं थे। डॉट की जगह डेड बॉल का इशारा अंपायर का। ये शॉट बड़ी ताकत से लगाया है और 4 रन यहां पर बटोरे दिव्यांश ने। जानते हैं मुकाबला बहुत दूर जा चुका है, पर लेकिन थोड़ा दर्शकों को एंटरटेन किया जाए अपनी बल्लेबाजी से। 2 युवा खिलाड़ी आमने सामने, 1 रन प्राप्त करते हुए। और क्या कमाल का कैच है यहां पर विशाल भाटी के द्वारा। हवा में कूदे और जबरदस्त कैच। बढ़िया कैच, आगे की तरफ डाइव लगाई और साहिल को यहां पर पहला विकेट दिलाते हुए, उस बेहतरीन एफर्ट के चलते हुए कप्तान ने
पूरी तरीके से सराहना की इस एफर्ट की। 108 पे 8। एफसीआई जानती थी ये बड़ा मुकाबला है, करो या मरो का मुकाबला है, जीते तो सेमीफाइनल में जगह पक्की। और अब जिस प्रकार से खेल नजर आ रहा है, लगभग अपनी जगह पक्की कर ली उन्होंने। डॉट बॉल। पहले मन नहीं था रन लेने का, आखिरी समय में मन बनाया रन लेने का। चलिए सफल ओवर समाप्त 18 के बाद 109, 8 विकेट के नुकसान पे। डॉट बॉल। पिछले ओवर में क्या कमाल का कैच पकड़ा इन्होंने और जबरदस्त गेंदबाजी भी की है। ये मिस टाइम शॉट है, साहिल के द्वारा एक और बढ़िया कैच। पिछले ओवर में जनाब आपने कैच पकड़ा मेरी गेंदबाजी पे, तो इस बार मैं पकड़ता हूं कैच आपकी गेंदबाजी पे। 9वां विकेट गिरता हुआ, दूसरा विकेट विशाल भाटी को मिलता हुआ। आखिरी बल्लेबाज स्वप्निल आते हुए बल्लेबाजी करते हुए। दो स्लिप तैनात है, क्या वो आखिरी विकेट मिलेगा इनको? क्या शॉट है, आप 2 स्लिप तैनात कीजिए, मैं गेंद को मिड विकेट की तरफ 6 रन के लिए पहुंचाता हूं। खेमा खुश, हार जीत चलती रहेगी पर लेकिन ये शॉट ने पूरे खेमे को खुश कर दिया। फिर से गेंद मैदान से बाहर। कितनी बार गेंद बदली जाएगी? एक 115 पे 9। एक और बड़ी हिट और एक और बार गेंद मैदान से बाहर। चलिए फिर से इशारा किया अंपायर की तरफ, ले आइए वो बॉक्स जिसमें गेंदें रखी हैं। जबरदस्त हिटिंग स्वप्निल के द्वारा।
विकेट के लिए जा रहे, गेंद ऊपर कर रहे हैं, न्योता दे रहे हैं कि कोई एक मिस टाइम शॉट और वो तीसरा विकेट मिल जाए, पर लेकिन दोनों शॉट बढ़िया अंदाज में बल्ले के बीचों बीच यहां पर लगते हुए और 6 रन प्राप्त किए हैं और बड़ी आसानी से इसको साहिल की तरफ खेल दिया, कोई रन नहीं। चलिए 19 ओवर का खेल समाप्त, एक और बचा इस मुकाबले का, 121 पे 9। चलिए स्वप्निल स्वास्तिक आए, माफ कीजिएगा, स्वप्निल के विरुद्ध गेंदबाजी करने के लिए। एक और बढ़िया हिट, एक और छक्का, पर इस बार स्वप्निल अपने साथी दिव्यांशु को देखेंगे वो छक्का लगाते हुए। ये मिस टाइम शॉट है, लेकिन एक रन जरूर मिल जाएगा। चलिए अब स्वप्निल स्ट्राइक पे आ चुके हैं, 4 गेंदें बची है, क्या करेंगे ये? क्रीज का इस्तेमाल किया, कलाइयों का उपयोग किया और 1 रन प्राप्त करते हुए एक रन और मिल जाएगा। सिंगल से संतुष्ट रहना होगा। चलिए इस मुकाबले की आखिरी गेंद, सीएजी पहले से क्वालिफाई हो चुकी है और अब इस गेंद के बाद मोहर लग चुकी है कि यहां पर एफसीआई दूसरी टीम बनी है ग्रुप ए से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले, और इस मुकाबले को उन्होंने जीत लिया यहां पर 43 रन से। करो या मरो का मुकाबला था, उसमें बढ़िया प्रदर्शन किया टीम ने और इस जीत के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा का सफर भी समाप्त। वो ये सोच रहे थे कि ये मुकाबला यहां पर एआई जीत जाए तो उनका मौका बन जाएगा, पर बढ़िया मुकाबला था और बॉर्डर्स में कुछ 1-2 बल्लेबाज चल जाते तो फिर और बेहतरीन हो जाता ये मुकाबला। बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी बढ़िया क्रिकेट खेली, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मुकाबला एफसीआई ने 43 रन से जीता। नजर डालते हैं बैटिंग कार्ड पे। जी हाँ, सर्वाधिक रन वहां पर बनाए यशवर्धन ने 35, आदित्य ने बनाए 23, 17 रन बनाए वहां पर अभिजीत ने और 15 दिव्य अंशरावत और 14 रन स्वप्निल राय ने। नजर डालते गेंदबाजी पे, जबरदस्त गेंदबाजी हुई है, 3 विकेट
जो पहली इनिंग में नदीम ने लिए थे। एफसीआई की गेंदबाजों की बात करें तो 2 विकेट यहां पर विशाल को मिले, 2 विकेट राजेंद्र बिष्ट, 2 विकेट जयेश को, 1 विकेट साहिल को। मैच समरी पे नजर डालते हैं। एफसीआई ने 175 बनाए, साहिल और अग्निव ने 41 रन बनाए, 3 विकेट नदीम ने लिए, उसके जवाब में 132 रन ही बना पाई एआई। वहां पर यश वर्धन ओब्राय ने बनाए 35, 2 विकेट विशाल, 2 विकेट राजेंद्र, 2 विकेट जयेश और एफसीआई ने मुकाबला जीता 43 रन से। नजर डालते हैं हाईलाइट्स में, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन पे। धन्यवाद। Commentator MC KB. And Sahil Parak is the man of the match. 41 runs in 25 balls. এই রিঙ্কুদা সাহিল পারাক একটা উইকেট আছে তো? হ্যাঁ এক উইকেট। लीजिए आप वो टॉस के लिए रेडी हो जाओ, साइड में मिलेगा। मैं रेडी हूं। माइक चेक 1 2 3। माइक चेक 1 2 3। बता देना। माइक चेक 1 2 3। Welcome to the post-match presentation of All India Public Sector T20 Cricket Tournament 2026, organized by Coal India Limited. It was an important game. It was a do-or-die game for FCI, and they really performed well and won this game by 43 runs as they make it to the semi-final. Now it is time to introduce our guests for the post-match presentation. Today with us we have Mr. Rajiv Kumar from Coal India over here. Thank you, sir, for being over here. And now it's time to hand over the man of the match. Agni really played for his 41 not out, but in the end, it is Sahil Parak who is the man of the match for 41, 1 wicket and 2 catches. In an important game, performing well with the bat, doing a job with the hands and then getting a wicket over here. Sahil. स्टार्ट अच्छी मिल गई थी, कहीं ना कहीं निराश होंगे कि बड़ा स्कोर फिर से नहीं बना पाए। वही ट्राई कर रहा हूँ कि जितना मैं रहूँ अंदर टीम के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, आज मतलब सेट हो गया था तो पूरा खेलना चाहिए था, पर आज कन्वर्ट नहीं हुआ। एक मैच चलता है जी, एक मैच चलता है, पर लेकिन बड़े मुकाबले में आज एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस देखने को मिला आपका। अच्छा है, मतलब अच्छा फीलिंग आ रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ मैं टीम के लिए। टीम भी जीत रहा है, अभी हम सेमीफाइनल में गए, अच्छा टीम एफर्ट डाल रहे हैं सब। बस चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर द सेमीफाइनल। थैंक यू। सो दैट इज ऑल फ्रॉम दिस पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन। I would request FCI
FCI team, can you join over here for the team photograph? And AAI also. RBI के कप्तान और UBI के कप्तान टॉस के लिए पहुंचे पिच पे प्लीज. The officials of the next match, observer Joyjit Basu, please come into the center for the toss.